नहीं आ रही आवाज। टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने, लेकिन मैच जीता सनराइजर्स ने। 3 रन से मैच जीता है, बट दे आर स्टिल अलाइव इन दिस आईपीएल 2022 एंड टॉप क्लास। व्हाट अ मैच अभिजीत। pretty close game, I would say. जब एक टाइम तो लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद आसानी से जीतेगा, लेकिन टीम डेविड, what a performance. I Prantik think Mazumdar, where is he? Wake him up. Team David's biggest fan. Singapore. व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार। Yeah, लेकिन superb. उन्हीं के इनिंग से मैच बना था और उन्हीं के आउट होने से मैच पलटा। जयदीप करेक्ट। जब भी है सिंगापुर को जितना भी बच रहा है उनको उठाओ नींद से। आज तो बनता है, जीता दे तो मैं उठा देता। हाँ, लेकिन अच्छा खेली मुंबई। वो गेम चेंजिंग मूवमेंट ज़रूर बना था। लेकिन पहले सनराइजर्स की बात करते हैं। टॉस नहीं जीता जयदीप, लेकिन मैच जीता उन्होंने। और बीच में उमरान मलिक का वो स्पेल और वो 19th मेडन ओवर, विकेट मेडन फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार, ये एक्सपीरियंस बोलता है। सामने बुमराह भी आ गया था 4-5 बॉल के लिए। That also helped, I suppose. But yeah, that run out changed it. And to get the hand, I think Team David just made an error in judgment कि कितना दूर बॉल गया है लगने के बाद, और वो फ्लो पे निकल गया। और हमारे कभी-कभी होता है ना रीमा जी कि हम निकल जाते हैं, उसके बाद पता चलता है गलत हो गया, लेकिन अभी तो भगवान भरोसे। बट मुझे लग रहा था कि वो ना वापस चले जाते। नॉन स्ट्राइकर शायद विकेट अपना थ्रो कर सकता था, बट हीट ऑफ द मोमेंट शायद उस टाइम उनको पता नहीं चला कि बॉल कहाँ था, जैसे आपने बोला। लेकिन वो बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन क्या मुझे लग रहा क्लीन था हिटिंग देखने को मिली। रीमा जी, मुझे लग रहा था वो इतना जोर से, इतने इंटेंसिटी से दौड़ पर है। तो रीमा जी अगर वो बॉल भी उठाते ना तो कीपर को ही फेंकते, तो उनको आउट करना था ना मैच जिताने के लिए। तो सब बोल रहा था कीपर्स एंड, वो वापस भी जाते, वापस नहीं जा पाते। ही रियली वाज 3-4 डाउन। देवाशीष वेलकम। थोड़ा लेट ज्वाइन किया बट टाइम पे ज्वाइन किया। सनराइजर्स हैदराबाद, विलियमसन आज अपने आप को उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में डिमोट किया। यही हम कह रहे थे कि अगर आप अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, यस, बट आप अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि टीम आपकी आज अच्छा खेली है। 193 का जो स्कोर गया ना, वो बैटिंग ऑर्डर में जो आज थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला है, उसका एक रीजन है। पूरन को आपने ऊपर भेजा, फॉर्म का यूज किया। प्रियम गर्ग अपना पहला मैच खेल रहे थे, क्या स्टार्ट दिलवाई उन्होंने। 26 बॉल्स 42 रन्स। You're on mute, Devashish. Unmute yourself, please. जैसे मैंने प्री शो में कह रहा था कि he should go out there and express himself. That is what he did today. Just he played every ball on a positive intent, and the results showed. It was a brilliant start for Sunrisers Hyderabad. And then at the end, I would say that they were 10 or 15 runs short. Again, Kane Williamson towards the end messed it up. If had Mumbai Indians won the match, they would have definitely blamed Sunrisers Hyderabad. Would have definitely blamed their captain, because those final overs, those death overs, they scored only 29 runs and lost 4 wickets in those last 4 overs, and that might very well could have hampered their chances. और रमनदीप का वो स्पेल 3 विकेट लेके चले, लास्ट में उनको भी यूज करके देख लिया। ये रोहित शर्मा ने बता दिया कि वो हर पॉसिबल चेंज करते नजर आएंगे, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो अभिजीत, चाहे वो बॉलिंग यूनिट में हो। कैप्टनसी अच्छी रही, लेकिन फिर थोड़ा सा मैच खत्म नहीं कर पाए। मुंबई इंडियंस ऐसा नहीं है कि खराब खेल रही है, जीत नहीं पा रही। I think somehow जो losses जो इस सीजन मुंबई इंडियंस को मिले, आई थिंक उससे उनका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हुआ। अगर यही कुछ मतलब अगर मुंबई इंडियंस शायद रेस में रहती प्लेऑफ के लिए, तो शायद मुंबई इंडियंस से मैच जीत, क्योंकि जो इतने मैचेस आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला है। आई थिंक आज वापस तिलक वर्मा अच्छा नहीं खेल पाए, टीम डेविड अच्छा खेले मिडिल ऑर्डर, तो जो मिडिल ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है। I mean, opening of course, Ishan Kishan and Rohit Sharma hasn't been that good. But I think जो weakness रहा है वो not the consistent by the middle order मुंबई इंडियंस का, इसलिए Abhijit, I also feel Tim David is the new Karen Pollard. Big shoes to fill, but looks like he's got big feet. Agreed. Right. Yeah. मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं अभिजीत। या प्लीज अभिजीत।
think there's some. Hello, can you hear me? Yeah, Yes, we can hear yes, you. yes, yes, Abhijit, Me too. please. Yeah. So yeah, as I was saying, like उनका consistently नहीं रहा है, middle order. But good to see Team David. I think Brevis भी काफी अच्छे player है. So I think maybe for the next season it will be good to when Jofra is also probably back. So I think Women's maybe have a good team next season. जयदीप, राहुल त्रिपाठी, हम शुरू से इनके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे आज भी आए, लेकिन व्हाट अ नॉक ही प्लेड, 76 ऑफ जस्ट 44 बॉल्स। कहीं न कहीं अब ये भी चर्चा में आने वाले हैं जब सेलेक्टर्स पेन पेपर उठाएँगे। Gee, I've actually been a big admirer of his for a long, long time, and I faced the brunt of it. I was coach of 125 Bengal when we played Maharashtra, and he got 117, 101 balls in a 4-day game against us at the Eden Garden. So I've seen him at his best. Then that very same year, Gujarat and Maharashtra were playing the 125 final, which you know is serious cricket, and हुँ, I think Maharashtra were 50 for 5, and he got 326 from 50 for 5 and won them the game. He's got 5-wicket haul against Mumbai, so I'm a huge admirer of his. I know how good a cricketer he is, and I'm glad that he's coming apart. And as Debashi said, finally he got to open, हुँ, and finally Kane Williamson. I think Debashi must have had a quiet word with him. Skipper, enough, move down. That's what it took. But I think today he could express himself. Today he could play those most number of balls. Today he could bat in the power play, the 6 overs. And like Rimaji, you and I say, put the spike mark on an absolutely barren ground, which feels great to have the leg stump taken and the middle stump taken, or whichever card you take. So that comfort level is just few balls, but I think, and also knowing that he's got 36 balls, and even if he faces 20 or 22, he could be 40, 45 batting, and then you take up from there. So that's exactly what happened. But he's हुँ, a special player. Very good fielder, can bowl. I don't know why he doesn't bowl anymore. Maybe he's got some back issues or not, because he keeps getting injured. That's the only thing that goes against him. You'll always see he's ripped, very fit, very strong, runs very quickly, but often has these major injuries, these cramps, and he keeps getting injured. But otherwise, super lad also, very, very good team man. I think he's one player KKR definitely should have retained, because he's the sort हुँ, of player, he's a domestic player, he's the sort of player, his consistency is outstanding. And, they've retained some players, or they've gone for some players who might play more impactful innings but not as consistent as him. Sometimes these sort of players, you look by them because, you feel that, take yaar, but, wo wala innings. But innings doesn't win you the tournament, neither does it make you qualify. It's the number of times you do it that makes you qualify. I think एब्सोल्युटली from ट्रू। the time he has played for the IPL, he has been consistent. First time he played for Rising Pune Super Giants, so they reached the final. There also he scored more than 400. Every time he has played for KKR, he has done well. I think probably for the South Africa, he should be in the part of the Indian team. दिव्यश्री, सनराइजर्स का दिन रहा आज। बैटिंग में उन्होंने अच्छा किया, बड़ा स्कोर किया, हाई स्कोरिंग गेम ये रहा, लेकिन बॉलिंग में भी शुरुआत अच्छी हुई थी। रोहित और ईशान की पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन फिर पार्टनरशिप जो ब्रेकर बने, उमरान मलिक आए, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉल डाली। टी नटराजन आज बहुत महँगे साबित हुए। वो एकमात्र ऐसे बॉलर थे जिनको 4 ओवर में 60 रन पड़े, लेकिन उसके अलावा उमरान मलिक ने लेट बॉलिंग किया, मिडल ओवर में जो डैमेज किया, जिसकी बात कर रहे थे अभी अभिजीत की, कोलैप्स हुए, वहाँ से मैच निकला हाथ से। बहुत बड़ा रीज़न है उमरान मलिक, पेस इनके पास है, इसलिए अगर उनको रन भी पड़ जाते ना, तो आप थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बिग मैच विनर बनेंगे आगे। जी, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहली बॉल पे जिस तरह से रोहित का हेलमेट पे लगाया, हुँ, मीन्स ही कीप्स ऑन सरप्राइजिंग, क्योंकि हार्दिक का भी हेलमेट पे लगाया था गुजरात टाइटंस के मैच में। तो ही इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि ये वो ही वाज कोटेड एज सेइंग दैट ही एंजॉयज हिटिंग द बैट्समैन ऑन देयर हेलमेट। तो क्या कॉन्फिडेंस है एक यंगस्टर का, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। और आज भी उन्होंने, इट वाज शेयर पेस, जब खास करके तिलक वर्मा, द वे ही गॉट आउट, इट वाज अ एक्सप्रेस डिलीवरी, द बॉल केम टू फास्ट एंड ही तो उस वजह से वो आउट हुआ। और आज भी ही वाज बबलिंग इन कॉन्फिडेंस, हालांकि वो उसका मार पड़ा ईशान किशान, वो हुँ, छक्का लगाया, बट फिर भी एंड दैट वाज, एंड
I would say that credit to the Sunrisers Hyderabad think tank, especially the likes of Dale Stein and the other legends who are in that dugout, Muralidharan. They must be giving him a lot of confidence. Yeah, absolutely, absolutely, and it's good to see that he's not afraid of bowling faster balls, because कभी 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 अक्सर होता है ना, जब आप फास्ट बॉल करते हो तो बहुत बहुत कुछ बोलता है, ये नहीं लाइन क्लाइन मेंटेन करना है, वेट स्विंग करो, मगर he is raw, so let him bowl fast. Yeah, I think I just like to. Yeah, go on, Abhishek. Yeah, I would just like to Natarajan. I think he maybe उनका आज दिन खराब था, but he's a super bowler. I think उनको Definitely. टीम डेविड ने इतने छक्के पड़े, but think his 4 छक्के his मारे एक cricketing ओवर mind. में। हाँ, तो think is I mean after that उन्होंने रन आउट किया, that too it was a very good cricket since I would say. यूजुअली जो रन आउट उन्होंने किया, मे बी हो सकता था कि वो बॉल थोड़ा जल्दी फेंक देते, बट वो बॉल लेके स्टंप पे किया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड क्रिकेट सेंस. वी हैव सीन इन वन ऑफ द मैच जहां पे ऐसा फेंक देते थे अंडर आर्म भी, एंड वो थोड़ा सा अगर साइड से आता तो मे बी मुंबई इंडियंस कुड हैव वॉन दिस गेम, एंड ड्यू टू दैट विकेट मैच पूरा थोड़ा सा पलट गया, आई वुड से, बिकॉज जी इन जी जी, लास्ट बिल्कुल 2 बिल्कुल। overs I think that was a very good cricket sense by T. Natarajan, although he was expensive. I think he's just a fantastic bowler. Just a bad day for him. आई टोटली एग्री विद अभिजीत, क्योंकि टीम डेविड अगर रहता क्रीज पे, मुंबई इंडियंस वुड हैव डेफिनेटली वन द मैच, क्योंकि क्या बैटिंग, अनबिलीवेबल. प्रांतिक विल बी हैप्पी, द हैप्पीएस्ट. Joydeep, you want to add something? Yeah, I was just saying that, just what Devashi said, I think, with somebody like Umran Malik, what happens is when you're stump to stump, then he's very dangerous. Because he has space, when he gives room outside off stump, leg stump, you can, you can open up the field. But as cricketers, we know the quicker the ball, the less time we have to wind up for a shot. And the less time we have to wind up for a shot, the less power we are getting. So when somebody is bowling quick, the moment they start taking the backswing back to the optimum level and bringing it down to get maximum power, that diminishes because the ball's that much quicker. So that means I cannot take it back as much as I would like to. It's shortens by 10%, 20%, 30%. And then that resultant of that is that my power, I'm compromising on my power. That is what pace does to you. It comes on to you quicker, so your bat cannot go to its optimum level, so you cannot get most power. So this is where he's like today with Tilak, what happened, he just ball rushed on him. If this was a slower bowler, he could have wound up a bat a little more and maybe got enough time to get under the ball. But his pace doesn't give you that. Just wanted to add that to it. Joydeep, 140 उमरान मलिक की स्लोअर बॉल होगी, ये कह सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें लग रहा है उनको अगर लीथल होना पड़ेगा तो स्लोअर बॉल 120 पे लाना पड़ेगा. ये हो जाएगा. डिफरेंस है. इजी है एज अ कोच, आपको लगता है हो जाएगा? हाँ, 100% हो जाएगा. जो बैठे जिनके पास वो रहते हैं, I believe he's spending a lot of time. Devashish will have more info. Spends a lot of time in NCA. He's with the Indian team, in and around the Indian team. They know how special he is. They know he's an absolute jewel in our hand. And he's not spending any time away from these experts. So whether it's Troy Cooley, whether it's I don't know, Paras Mambre, NCA, people in NCA who are there, very good faculty over there. He's always in their eyes. He's not away from their eyes. He's not in JNK or in Bombay or somewhere. He's always under somebody's eye. He's not been allowed to go away even for a week, because bad habits can come in. Because once he becomes what he becomes, then he can go to Bombay and wherever he wants to go. But now it's in the formation process. Now it's very important to stay in the link, so that everybody, till he's done, till we put the food on the table for you serve, till then it's very important to make sure everything is okay. Once you put the food on the table, then it's for everybody to enjoy. So that's the reason why he is a very, very... See, ये पेस तो आप बना नहीं सकते, कभी भी नहीं. 140, 145 बना नहीं सकते, 150 तो छोड़ ही दीजिए. So that is the reason why. And then the slower ball, I'm just thinking red ball, can you imagine? I've said this a couple of times before, so I'm repeating myself. But India versus New Zealand in Auckland, and Abhijit and Devashish sitting in the press box.
and it's 9 degrees and green top, and Umran Malik 4 steps the gully. I'll be at mid on if I'm the skipper, but just be good to see him play. डेंजरस है वो, मतलब हर बैटर उनसे घबराएगा आने वाले टाइम पे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, लेकिन ऐसी पेस को ना हैंडल विद और क्लियर रीमा जी करना रेड पड़ेगा बॉल का क्योंकि उनका सोचिए, रेड बॉल का स्विंग बिल्कुल मैं सोचिए, रेड वेट बॉल कर रही का हूँ उनको न्यू देखने रेड का। बॉल, वो ट्रू ट्रू न्यू अगर रेड वो बॉल। पेस उन्होंने राइट हैंड पे हिट किया तो वो लीथल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इंजरीज पे भी उनके वर्कलोड पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ऐसी पेस रोज रोज मिलेगी नहीं, लेकिन आज का मैच रहा सनराइजर्स के हाथ में। उमरान मलिक की कहानी बताएंगे, आज त्रिपाठी की बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, ये दो ऐसे मैच विनर्स निकले हैं जिन्होंने आज मैच गेंद से और बैट से अपने नाम किया है। 2 पॉइंट्स अपने नाम किए, लेकिन अच्छी बात क्या है रेस में बने हुए हैं। हालांकि सनराइजर्स अभी उस पोजीशन पे है जहां पे लास्ट वाला मैच ना उनको बहुत बहुत ज्यादा रन से जीतना होगा, या फिर उम्मीद करेंगे जो दूसरी टीम है वो शायद हारे तो सनराइजर्स ऊपर पहुंचे। रहा बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चलते हैं कल की मैच की तरफ, जाते जाते उससे भी बात करेंगे। कल है एक और बड़ा मैच, बिग मैच, क्यों? क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस एलएसजी। अभिजीत, लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पिछला मैच हारी थी, अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है। मौका है उनके पास टॉप टू में पहुंचने का। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी मौका है, अगर वो अच्छे से मैच जीतते हैं, 2 पॉइंट्स भी हासिल करते हैं, नेट रन रेट में भी इजाफा करते हैं, तो उनके पास भी कहीं ना कहीं जगह बन सकती है प्लेऑफ में। क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस मैच से? I think Lucknow will be confident because जो last match हुआ था in Pune where Lucknow defeated KKR. So I think they know probably what we do. And I think uh, on paper Lucknow is very strong as compared to KKR, but KKR also has that edge factor where they can surprise Lucknow. And Lucknow को ये है कि अगर जीत गए तो in the top two, but I think the match is really do or die for KKR. If they win, only then they have a slight chance to make it to the playoff, but which is also will depend on a lot of scenarios. RCB हारता है, Delhi Capitals हारता है. But I think Lucknow will would like to win this match, not because obviously second पे जाने का उनको चांस मिलता है. जयदीप, लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नंबर 3 पे पिछली बार बदोनी को भेजा, स्टॉइनिस अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मिरेकल इनिंग की वेट कर रहे हैं। अब शायद वो ठहराव लाना होगा, क्योंकि बार-बार आप मैच हारेंगे ना तो मोमेंटम खत्म होगा, वो कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं डेंट पड़ता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, because I think with the wicket slowing down, Stoinis needs to bat 3. He needs that ball to be newer. He needs that ball to skid onto the bat. He needs to utilize the power play because 3 often bats in the power play. If it was Australia and he playing on those wickets, it's not a problem batting at 5-6 for him because the conditions don't change a lot. But we have seen in this IPL 4 grounds, 18 matches in each of the grounds. We've seen that the wickets are slowing down considerably. And also, with that new Kookaburra ball getting a bit older, it's just gripping sometimes with the slower balls, with the spinners. So Stoinis would enjoy that lacquer on the ball when it skids on. Before it's got a little bit rough. So that lacquer where the spinners, even if they bowl, they don't get that much. It skids onto the bat, and that'll help him. Once he is 17 ball 28 batting, then his flight's taken off. Then you're in air. The problem is sometimes for these players to take off is difficult if they are brought up in a different sort of conditions, and you want to give them those conditions as much as possible, and that's at the top of the order. देवाशीष, केकेआर के लिए क्या कहेंगे कि क्या प्रेशर तो डेफिनेटली होगा, ऑन एंड ऑफ ये अच्छा भी खेलते हैं, कभी एकदम कोलैप्स होता नजर आता है, लेकिन यहाँ पे रसल के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। अच्छी फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर को कप्तानी पारी खेलनी होगी, बोलर्स को अपना रोल निभाना होगा। आप प्लेऑफ में आते हैं या नहीं आते वो सेकेंडरी, लेकिन कोशिश करना बनता है। जी बिल्कुल, and I would say that it's a blessing in disguise for KKR to see Ajinkya Rahane ruled out of IPL, क्योंकि they have the option now to have Sheldon Jackson as well. तो आप Sheldon Jackson, Sam Billings दोनों को खिला सकते हो, तो that strengthens the batting somewhat. और ये अच्छा है क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि अय्यर भी looking signs of coming good, तो ये एक पॉजिटिव साइंस है। तो if KKR bats well, because bowling has been their strength, क्योंकि तो अगर वो बैटिंग ठीक से सही से कर सकता है तो एंड जैसे कि आपने कहा कि देखिए ये मैच तो उनको जीतना है ही है, अगर उनको क्वालिफाई करना है तो डोंट लुक, अगर मैं इफ आई हैड बीन द रोल ऑफ मैकलम, आई वुड से दैट don't look at the equations,
as to what is the margin of win, or first make it ensure that you win the match. KKR should ensure to win the match first, rather than thinking too much ahead कि ये रन रेट से जितना है, इतना मार्जिन से जितना है, ये सब सोचेगा तो असल में कुछ नहीं होने वाला है. तो just go out there, because they have done well in the last couple of matches. They had the momentum. Now all they need is to go out there and give it their best shot. प्ले टू विन पहले यही मंत्र होना चाहिए. आप नेट रन रेट पे बाद में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीतेंगे तो वो अपने आप काउंट होगी. जाने से पहले फटाफट से एक प्रेडिक्शन हो जाए. जयदीप, सबसे पहले आपके पास. Yeah, I'll go with KKR for the simple reason I think they are. It's my team, and besides that, I think they've got more X factor players. You know, like a Sunil Narayan with the ball, Varun with the ball. He's back in the game with the wickets. Andre Russell, Nitish Rana in spurts, Venkatesh Iyer in one game. You know, they've got players who are in a small place can make a lot of impact and go. And I feel they'll be free. They've got not much pressure. I'm here in Kolkata, and everybody is waiting for the top two teams to come because they play the first match over here. So everybody says Gujarat is coming day after, and they're practicing here and they're practicing there. And so all these, I feel the buzz of the IPL in Kolkata already. You know, with the Eden Gardens being made ready for the matches, the lights being tested. You know, it's that time. Diwali ka pehle jo hota hai na, sab hum dekh lete ki वैसे माहौल है इधर. So I think they want to be in the top, but I'm just putting KKR ahead because nothing to lose, in a sort of form, you know, won a couple of games, things are happening for them. This doesn't guarantee them a place in the four, but would you never know? I mean, a lot of things have to fall in place for KKR to qualify, but they could easily make Lucknow 3. KKR ahead of LSG. Abhijit, your views? Actually, I also agree with Joyda a bit, because Lucknow has lost two matches in a row. So, and I think KKR is very, a very balanced side, I would say. Not in the best form throughout the IPL, but they can surprise Lucknow. But I think, you know, Lucknow knows, like, they are a really good team this season. They have beaten KKR recently. And I think, to my understanding, is recently what I've seen in the recent matches is the team batting first, you know, even if they put on a good score like 160, 170, the team chasing is under pressure. So I think that's what I've seen in the last 8 to 10 matches. Only the match between Chennai and Gujarat Titans is the one, Gujarat Titans, just because that too the score was 130. But having said that, KKR is a good team, but I think still it will be very difficult to beat Lucknow. So I'm going with Lucknow tomorrow. एक वोट को KKR को, एक लखनऊ को. देवाशीष. I would go with KKR in this match. Then Joyda will jump into and say, come on, what is it? But then it's all about momentum, T20 format. And KKR has the momentum right now. Maybe for two matches, things have clicked for them. Russell scoring runs, getting those wickets. Sunil Narayan has been doing well. Venkatesh Iyer showing signs of it. Things are falling in place. Maybe it's a bit too late, but then KKR might as well end up winning the match, but that doesn't guarantee them making it to the playoffs. But then at the same time, Lucknow Super Giants are also the losses might have hurt their ego somewhat, and you have someone, as you always maintain, that someone of the stature of Gautam Gambhir, who is a no-nonsense coach. So he would like to make it a point to ensure the first two positions. So that is the biggest motivation for Lucknow Super Giants. So they would love to ensure that they be at the top two. So, Especially against KKR. Yeah, especially against KKR. Right. So Okay. I would go with KKR. रीमा जी, आपका प्रेडिक्शन? मैं चेंज नहीं होती. मैं अभी भी LSG के साथ, लखनऊ के साथ ही हूँ. मेरे को वो कैसे ना कैसे जीत जाएंगे, पहुंच जाएंगे. 2 मैच हार देना, तीसरा बर्दाश्त नहीं करेगा. पहुंच तो गए हैं, वो पहुंच तो गए हैं प्लेऑफ. लेकिन टॉप 2 पे जब आप पहुंचेंगे ना. Rima ji only supports KKR when we talk Kolkata when we talk about Rasgulla. Otherwise, it's always the other team.
मुझे अभी भी लगता है कि एलएसजी इज अ बेटर साइड। सिर्फ थोड़ा एक्सपेरिमेंट अगर वो बंद कर देंगे ना तो शायद एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हुडा नंबर 3 पे अच्छा खेल रहे हैं। दे शुड यूज माइकल स्टोनिस को अच्छे से यूज करना चाहिए। बाकी बॉलिंग तो अपना काम कर रहे हैं। केएल राहुल के बैट से रन आने चाहिए, लेकिन कल डीवाई पाटिल में इन दोनों टीम का होगा आमना सामना। अब ये अनदर मैच नहीं है, अब हर मैच में प्लेऑफ्स में जाने की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कल पता चलेगा। मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एंजॉय। गुड नाइट। Thank Good you. night. Good night. Thank Bye. you. Good night.